Hello everyone, welcome to today's session, that is lecture number 2 of chapter 1, class 2 of biology, reproduction in organisms, exemplar solution. And myself Dibyaranjan Parida, I am pursuing my second year MBBS in AIMS Bhubaneswar right now. So our first part of MCQs and very short answer type of question or discussion a chapter exemplar जोटा कि class 12 biology chapter number 1 reproduction in organisms उपकार organism reproduction केमती ता विषय तो आज हम स्टार्ट करिया कोड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करिया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वेरी शॉर्ट खत्म इतला वेरी शॉर्ट सॉरी इतला आज हम स्टार्ट करिया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन को हम लिखिया in haploid organisms that undergo sexual reproduction name the stage in the life cycle when meiosis occur give reasons for the answer तो पचार haploid organism मानको जो sexual reproduction हुए ताकर को स्टेज रे meiosis occur होता ना लाइफ साइकिल तो को स्टेज रे meiosis होता है और ता रीजन दियो तो meiosis केवल डिप्लॉयड स्टेज रे ही परिबो एटा हम जानि जे डिप्लॉयड स्टेज ही रिडक्शन डिवीजन करे कि haploid हे परिबो तो meiosis कोन ना सब डिप्लॉयड स्टेज रे ही परिबो तो सेटा केतळ हबो ना हमर जो जतळ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हला haploid organism सेठी कोन हला जायगोट फॉर्मेशन हला तो जायगोट टा होजे डिप्लॉयड तो जायगोट टा कोन हला तो जायगोट टा ही परे meiosis हे परिबो तो आंसर कोन हला ना दिस meiosis कोन ना केस ऑफ haploid organisms will occur of the fertilization तो कोन हला ना meiosis केतळ हबो ना जतबळे जायगोट फॉर्मेशन हो सेतळ कोन ना meiosis हबो इतर जायगोट फॉर्मेशन हबो डिप्लॉयड स्टेज फॉर्मेशन हो पोस्ट जायगोटिक स्टेज रे सेतबळे meiosis occur करिवो तापर क्वेश्चन the number of taxa exhibiting asexual reproduction is drastically reduced in higher plants and higher animals as compared to lower groups of plants and animals. Analyze the possible reason for the situation. तो पचास जो हायर टैक्स हायर ऑर्गेनिज्म मान करो जंते हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स मान करो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड हुए तार कारण कोन तो हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स कोन ताकर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अछि एज कंपेयर टू लोअर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो सेमानकर कोन ना वेरी एफिशिएंट मेकानिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इवॉल्व करछन्ती तांको देर कोन ना वेरी एडवांस्ड एंड इलाबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेकानिज्म तांको बॉडी रे कोन इवॉल्वड हिचे थ्रू इवोल्यूशन तो से ने कोन सेइत पे ए ग्रुप रे कोन सामान्य सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन करिया को एडॉप्ट करछन्ती अतर मेनली रीजन ओडा कोन ना टू एंसर हेल्दी प्रोजेनी तो एंसर हेल्दी प्रोजेनी कोन पे जेमते हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने पेरेंट्स और मदर्स कोडा डोमिनेंट एलील थियो कोडा रिसेसिव एलील थियो ताबले डोमिनेंट शो करबो तो सही कथा से लिखि जे पूरा एकातर पेरेंट्स एक्यूरेट न होगी जे तांको भितरे कंबाइन हेबे से बांधे जाको दिए जाको जीन जति कॉम्बिनेशन करे तांको भितरे समान कोना वेरिएशन शो करबो जे गोटे हेल्दी प्रोजेनी सृष्टि करिया रे हेल्प करबो आ कोन टू प्रोड्यूस genetically varied offspring that adapt to changes in environment and survival in all climatic conditions तो कोन फॉर्मेशन कोन करबे ना गोटे जेनेटिकली वेरिड ऑफस्प्रिंग माने जेटे जेनेटिकली मु कहतिल ना तो समान को जो जीन रो कॉम्बिनेशन हो ताने वेरिएशन सब करियो तो से कथा देखछि जदि गोटे जेनेटिकली वेरिड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो ताले से कोथरे हेल्प करियो ना चेंजेस इन एनवायरनमेंट आउ सर्वाइवल पाई सब क्लाइमेट को से कोन ना एडॉप्ट करि परियो आ कोन it ensures the genetic combination that results in variation which gives to evolution so our third point कोन हला to ensure it ensures the genetic recombination that results in variation which gives to evolution तो genetic recombination हेले एटा variation को result करियो जोटा कि evolution पे help करियो सेटा evolution को राइज करियो ताना को तीनटा पॉइंट फर्स्ट कथा कोन ना हायर ऑर्गेनिजम्स मान को कोन ना हाई ना मोर कॉम्प्लेक्स structural organization अछि तो सेमान को very advanced level of elaborate sexual reproduction mechanism तक सृष्टि जे तार कारण कोन फर्स्ट पॉइंट ताने कोन हला अरे फर्स्ट पॉइंट होचे ना टू एंश्योर हेल्दी प्रोजेनी तो एंश्योर हेल्दी प्रोजेनी तावडे हेल्दी प्रोजेनी हो पई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कले तार जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हेकी भलो भलो कैरेक्टर एगुडा को सो हबो जा फल कि हेल्दी पिला जन्म हो आ कोन ना टू प्रोड्यूस जेनेटिकली varied offspring that can adapt to changes in environment and survival in all climatic conditions ताने genetically varied offspring
तेरा कौन जीरा पॉइंट कौन होबो ना एडप्ट एडप्ट करे कौन एडप्ट एडो छोड़ा एडप्ट मो हार्श एनवायरनमेंट लाइक दिस सेतिके इंपोर्टेंट है जो हार्श एनवायरनमेंट बा सर्वाइवेबिलिटी आ गुटे कौन हला थर्ड पॉइंट कौन ना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है ना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन leads to the variation that leads to evolution then ए तीनटा पॉइंट में कौन ना हायर ऑर्गेनिज्म हायर टेक्सचर ऑर्गेनिज्म माने कौन करछंती माने निजर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एडॉप्ट करछंती इंस्टेड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज आवर 2 नंबर क्वेश्चन तापर 3 honeybees produce their young ones only by sexual reproduction. In spite of this, in a colony of bees, we find both haploid and diploid individuals. Name the haploid and diploid individuals in the colony. Analyze the reasons behind it. So haploid diploid के first honeybees मान करो. First तो था कि sterile diploid female अगर संधि honeybees मान करो. Male माने haploid और female माने diploid. तो पास्ट होचंदी वर्कर्स माने थांदी वर्कर्स माने होचंदी स्टेराइल डिप्लॉयड फीमेल्स तापर कोन ना वन फर्टिलाइज तापर आगन ना क्वीन थांदी क्वीन ता कोन ना गोटे वन फर्टाइल डिप्लॉयड क्वीन फर्टाइल डिप्लॉयड फीमेल एच क्वीन आउडे कोन थांदी ना फर्टाइल हैप्लॉयड मेल्स एच ड्रोन्स ताने तीनटा थांदी कोन ना वर्कर क्वीन ड्रोन वर्कर माने होचंदी इनफर्टाइल डिप्लॉयड फीमेल क्वीन होची फर्टाइल डिप्लॉयड फीमेल आउ ड्रोन्स होची फर्टाइल हैप्लॉयड मेल तो ए तीनटा तांगर थांती तांगर भीतर रीजन कोन ताकैना इन केस ऑफ honeybees both haploid and diploid individuals formed as a result of incomplete parthenogenesis that is both sexual reproduction and parthenogenesis a fertilized egg gives rise to female workers and queens by the process of sexual reproduction and unfertilized eggs gives rise to haploid males that is drones by the process of parthenogenesis तो सेट कौन लिखला ना तंगर फास्ट थांदे कौन तंगर तीनटा थांदे तने विवांकर में एठी लिख दे एठी बेटर रहबो 3 नंबर क्वेश्चन रो 3 क्वेश्चन फास्ट थांदे haploid male fertile egg drones diploid female fertile egg queen one था मतलब गोटे diploid queen था तो तापर diploid female infertile egg worker तो कौन हला तो fertilized egg था fertilized egg gives rise to queen worker तो sexual reproduction तो गोटे ना sexual reproduction देखी है sexual reproduction और unfertilized egg give rise to drones through parthenogenesis तो parthenogenesis unfertilized egg माने drones formation करते तेरा हमर honeybees से जला तेरा 4 नंबर क्वेश्चन देखियो with which type of reproduction do we associate reduction division analyze the reason reduction division रे means को हम sexual reproduction associate करो काहेंगे ना कहीं since sexual reproduction involves fusion of two types of gametes जेटा male gamete और female gamete fusion टा है sexual reproduction तो समान they must have haploid number of chromosomes तान ताका नियते haploid number of chromosomes रहबा दरकार माने समान sexual reproduction करी 2n केम जानबे तो सेट में haploid हबा दरकार ताका number of chromosomes haploid हबा दरकार the cell that is myocyte जेटा कि हम formation होचे which gives rise to gamete often has diploid number of chromosomes it is only by reducing the number of by half that we can get haploid gamete तो कोई चीज myocyte जेटा कि जो सेल था जेटा कि मैंने मदर सेल था जो सब गुडा को gametes सेटा कोन था ना सेटा diploid था ताने only by reductional division हम कोन ता नंबर को हाफ करके ता gamete formation करि परियो तो reduction division also ensures maintenance of constancy of chromosome number from generation to generation तो से बात जेटा स्टार्टिंग में कहते हैं कि reduction division
एनसीईआरटी कौन आंसर करे ना जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करबा ताको आंसर से करता है तो एटा तला जे तीनटा रीजन काहे रिडक्शन एंड डिवीजन नेसेसरी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट का कौन ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स में मेल और फीमेल गैमेट्स तो ऑब्वियसली सेटा हैप्लॉइड होगा दरकार और जो जो सेल जो गैमेट को जो द सेल दैट गिव राइज टू गैमेट दैट इज मदर से समय कौन था समय डिप्लॉइड थांती एंड ता नंबर को हाफ करके हमको हाफ कर जाएगा हमको गैमेट मिलबो आ कौन ना रिडक्शन डिवीजन कौन हेल्प करे हमको जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम नंबर को सेम रखे रहे हेल्प कर मेंटेन द कांस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन तो एटा तला तीनटा रीजन जो काहे कि हमको रिडक्शन डिवीजन दरकार Is it possible to consider vegetative propagation observed in certain plants like Bryophyllum, water hyacinth, ginger, etc. as a type of asexual reproduction? Give two or reasons. Give two or three reasons. तो से पचर जगन ना जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होचे ओटे ना ब्रायोफाइलम वाटर हायसिंथ और जिंजर एवडा करे कौन सा को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि हां ताने ता रीजन का तो जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट है वेजिटेटिव यूनिट जेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो देखा जाए ए जो सब बर्ड्स ट्यूबर राइचम्स एटसेट्रा तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं याको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर करा जो कारण एटा जो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल होची बाय ए सिंगल पेरेंट गोटे ही पेरेंट तो रीजन टा मडले होची काहे सेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हबो सेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काहे हबो फर्स्ट ये होची एटा बाय ए सिंगल पेरेंट एटा गोटे सिंगल पेरेंट रो होची तो एटा फर्स्ट पॉइंट कहीं आगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं कह जाए और कौन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट विदाउट फॉर्मेशन नो फॉर्मेशन लिख देबे नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन फ्यूजन ऑफ गैमेट ना गैमेट फॉर्मेशन होची ना गैमेट रो फ्यूजन होची तो सेट पे एटा कोन आबो ना ऑब्वियसली एटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स आ कौन ना without any genetic or morphological variation without resulting in genetic and morphology or morphology variation मतलब लिख देबे no genetic variation no genetic variation तो ए तीनटा पॉइंट तला कोन ना हमको कोजे जे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होचे गोटे एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एगन एटा गोटे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होचे एतरे फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट होउनी और एटी जेनेटिक वेरिएशन देखा जाउनी जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन देखा जाउनी तो एज पे कोन हला ना ब्रायोफाइलम वाटर हायसिंथ जिंजर ओडा कोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन टा कोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन fertilization is not an obligatory event for food production in certain plants explain the statement तो जो बिना फर्टिलाइजेशन रे भी फूड प्रोडक्शन नहीं करियो certain plants में करे तार कारण कोन तो fertilizer is not an obligatory event for food production in certain plants because some fruits are developed from unfertilized ovary called parthenocarpic fruits किछि बडा फ्रूट कोन तांती समान ऑर्गा ना ओवरी अनफर्टिलाइज्ड ओवरी रो डेवलप होतांती ताको कोन कहे ताको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोली कह जाए आ कोन दीज आर सीडलेस फ्रूट्स ओना कोन सीडलेस फ्रूट जेमति पोमेग्रेनेट ग्रेप्स एटसेट्रा फ्लावर्स ए प्लांट गुडा कर फ्लावर्स गुडा कोन ना ग्रोथ हार्मोन दे स्प्रे कला से फ्रूट डेवलप को इंड्यूस करतांती जा फल कि फर्टिलाइजेशन हबा आगरो ही फ्रूट डेवलपमेंट स्टार्ट है हाउ द ओव्यूल्स ऑफ सच फ्रूट्स हाउ फेल्ट डेवलप इनटू सीड्स दैट इज ए कौन लिखला देन क्वेश्चन से कौन कहला जे fertilization but obligatory fertilization is not an obligatory event for fruit production in certain plant तो लिखते जे फ्रूट प्रोडक्शन हवा पई फर्टिलाइजेशन टा गोटे निहाते जरूरी स्टेप नय काहे की ना लिखला जे केतोडा पार्थेन केतोडा फ्रूट्स छन जोडा बिना फर्टिलाइजेशन रे फ्लावर डेवलप हे जांती ताऊ कोनती पार्थेनोकार्पिक फ्रूट तमे कोन से समय फ्लावर कंडीशन तांती ताको ऊपर ग्रोथ हार्मोन स्प्रे करी की फ्लावर टा को फ्रूट रे कन्वर्ट करे को इंड्यूस करा जाए जा फल रे की समय फ्लावर टा फ्रूट से कन्वर्ट हुए बट तांके भीतर जो ओवल्स गुडा अछि सेडा सीड्स को मैच्योर होनी तो एटा सीडलेस प्लांट सो से को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहंदी एटा को बिना फर्टिलाइजेशन हे कि सेति को सीडलेस फ्रूट बोली कह जाए in a developing embryo analyze the consequences if cell divisions are not followed by cell differentiation तो से पजे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो जदी सेल डिवीजन न होला सेल्स डिफरेंशिएशन परे तार consequences कोन तो हम एति जान जे एम्ब्रियो जो डेवलप है ताको हमको जायगोट ताको एम्ब्रियोजेनेसिस कहंती तो तार एम्ब्रियोजेनेसिस टाइम रे जायगोट ढेरोडा सेल डिवीजन नाउ सेल डिफरेंशिएशन हेतै तो जदी सेल डिवीजन
कौन करिवो ना सेल डिवीजन नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करे डेवलपिंग एम्ब्रियो रो आउ सेल डिफरेंशिएशन कौन करे ना ग्रुप्स ऑफ सेल को सर्टेन मॉडिफिकेशन दे कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स रूपे फॉर्म करे तो एटी कौन कहला ना फास्ट सेल डिवीजन कौन करे एम्ब्रियो सेल डिवीजन नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करे आउ सेल डिफरेंशिएशन कौन करे से जो इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स को कौन करे ताको स्पेशलाइज्ड फंक्शन रे को स्पेशलाइज्ड फंक्शन पाई ताको मॉडिफिकेशन करे और ताको टिश्यू और ऑर्गन फॉर्मेशन में हेल्प करे देखि कौन ना बट मेन स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस कौन हो जदी डिफरेंशिएशन हबने ताने embryo cannot develop into a new organism যদি cell differentiation ହେଲାଣି ତାନେ embryo ଗୋଟେ new organism form କରି परिबनी एडा खाली ଗୋଟେ mass of cell ହେଇକି remain ହେଇଯିବ it will only remain as a mass of cell ତ ସେ କଥା लिखिजे जे ଆମେ ଯେମିତି କହିବା undifferentiated embryo undifferentiated cell mass in embryos is called callus तो ସେଇ भले callus formation हुए ସେ କଥା से लिखिजे ଯଦି हमरे embryo ଅଛି embryo ଯଦି cell division ହେଲା बट differentiation हेलानी ताने से नुआ ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन करि परन कहिना सेल डिफरेंशिएशन ही हेल्प करे नुआ टिश्यू नुआ ऑर्गन फॉर्मेशन करियारे जदी सेल डिफरेंशिएशन ही होबने सेटा गुटे अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स रहि जिवो तो सेति पय सेटा कोन कहत सेटा ऑर्गेनिज्म रे फॉर्मेशन हे परिबो नै लिस्ट ऑफ द चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन एन एंजियोस्पर्म फ्लावर सब्सिक्वेंट टू पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन तो पचार गुटे एंजियोस्पर्म फ्लावर रे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन परे तार कोन कोन चेंजेस थाय तो मैं तुमको जदि कहबी गोटे गोटे करी तुम मन रखिबो गोटे गोटे मु तुमको गोटे गोटे करी डाको गोटे गोटे फ्लावर प्लांट रो ताको तुम गोटे गोटे करी लेखि रखो जदि गोटे एंजियोस्पर्म फ्लावर अछि तार पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कोन हबो ना फर्स्ट होछि कोन ना तार सेपल टा कोन हबो ना सेटा फॉल ऑफ हे जिवो पेटल कोन हबो सेटा भी फॉल ऑफ हे जिवो झड़ी जिवो स्टैमेन कोन सेटा भी फॉल ऑफ हे जिवो जाइगोट कोन करबो ना एम्ब्रियो डेवलप हबो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कोन हबो ना एंडोस्पर्म बनेबो 3n बनेबो जेटा pn तेरा सेटा 3n बनेबो एंडोस्पर्म बनेबो सिनर्जिड कोन हबो ना डिसइंटीग्रेट हबो एंटीपोडस डिसइंटीग्रेट हबो ओवरी फ्रूट को डेवलप हबो ओव्यूल सीड को डेवलप हबो ओवरी वॉल पेरिकार्प बनेबो जेटा कि एपिकार्प मेसोकार्प और एंडोकार्प को मिसे कि पेरिकार्प बनेबो ओवरी वॉल इंटेगुमेंट्स कोन हबो सीड कोट बनेबो जेटा टेस्टा एंड टेगमेंट फ्यूनिकल ऑफ ओव्यूल कोन कहबो ना स्टैक ऑफ द सीड बनेबो माइक्रोपाइल कोन कहबो ना सीड पोर बनेबो तार तार तीनटा जाको ये कोन तला ना एटी ताने कोन चेंजेस होला गोटे गोटे कर लेखो जे व्हाट होची इन फ्लावर्स देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन टोमेटो लेखो गोटे कॉलम बने तो एटी एपर लेखो सेपल फॉल ऑफ पेटल फॉल ऑफ स्टैमेन फॉल ऑफ जाइगोट एम्ब्रियो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म सिनर्जिड डिसइंटीग्रेट हो जाए एंटीपोडस डिसइंटीग्रेट हो जाए ओवरी फ्रूट को डेवलप हुए तो ओवरी फ्रूट ओव्यूल सीड ओवरी वॉल पेरिकार्प जेटा कि एंडोकार्प ना एपिकार्प मेसोकार्प एंड एंडोकार्प इंटेगुमेंट्स सीड कोड जेटा टेस्ट एंड टेगमेंट फ्यूनिकल ऑफ ओव्यूल स्टाक ऑफ द सीड माइक्रोपाइल सीड पोर तो एटा तमे लिखि दे एपट दीपट साइड को करके लिखि दे एटा कोन कोन फॉर्मेशन होउछ एटा तला गोटे एंजियोस्पर्म फ्लावर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पर चित्र कोन चेंजेस देखा जो suggest a possible explanation why the seeds in a pea pod are arranged in a row whereas those in tomato are scattered in the juicy pulp तो पचार जे गोटे पी pod माने मटर ये काई सीड गुडा को गोटे रो रे अरेंज थांती बट टमाटर रे कोन थाय ना स्कैटर्ड हे कि जाय जूसी बॉल रे तो एटा मेनली होज कोन ना सेटा फ्लावर ना सेटा प्लांट रो तारा स्पीसीज और तारा फैमिली ऊपर डिपेंड करे तारा फैमिली होगा बोली तो सेटा कोन हबो ना पी प्लांट कोन हो पी प्लांट हो फ्रूट हो गोटे लेग्यूम तो सेटा कोन हो ना पी पोटा डेवलप केमते ना गोटे मोनोकार्पिलरी यूनिलोक्युलर हाफ सुपीरियर ओवर डेवलप so at maturity the food splits into dorsal and ventral sutures and discharges seeds in gynoecium with single carpal ovules are always attached to the ventral suture. This results in the fruit with marginal placentation. Thus the seeds are arranged in a row in legume. तो कौन देची ना पी प्लांट रे कोन होला पी प्लांट रे फ्रूट आउट जोटे लेग्यूम तार मोनोकार्पिलरी यूनिलोक्युलर और हाफ सुपीरियर ओवरी तो फ्रूट है तो स्प्लिट हो तरह डोर्सल और वेंट्रल सुचर देखा जाए तो जैसे गायनेसियम में सिंगल कार्पेल था
तो ओव्यूल्स माने कोन करते ना वेंट्रल स्यूचर संगे सब अटैच होके रहते तापर जहाँ पर जो फ्रूट जो डेवलप हो मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखा जाए तो सीड्स गुड़ा कौन था गोटे रो रे अटैच देकी था लिग्यूम पोड रे but in tomato fruit type of berry fruit is the berry it is fleshy fruit developed from superior or inferior ovary. In these, the margins of carpels grow inward to the center of the ovary, dividing the central chamber into compartments called locules, so that ovules are arranged radially on the axis, attached by placenta that is called axial placentation, and that is the reason the seeds are embedded in the juicy pulp. तो से सही कथा लेखिला जे टमाटर कोन टमाटर फ्रूट को बेरी कहती और सेतरे कोन तो नाटा गोटे फ्लेसी एटा गोटे फ्लेसी फ्रूट जेटा कि सुपीरियर बा इंफीरियर ओवर डेवलप होता है तार यार मार्जिन कोन दे कार्पस माने इनवर्ड ग्रो करन टुवर्ड द सेंटर ऑफ ओवर सेंटर कोन दे सेंटर चेंबर टे ढेरोडा कंपार्टमेंट्स को डिवाइड जाए जाको कि लोक्यूल्स कहती तो ओवल्स माने कोन हला समान रेडियली गोटे एक्सिस अरेंज्ड हेले attached by placenta that is called XII placentation. XII placentation तो मैं पढ़ी तो 11th class में so that is the reason the results are the seeds are embedded in the juicy pulp तो सेटा हो reason जहाँ पर seeds उड़ा juicy pulp पे embedded है draw the sketches of a juice pulp and a conidium mention two dissimilarities between them and at least one feature common to both structure तो कोई थी juice pulp और conidium भितर sketches draw करिबा और तांको भितर दीटा dissimilarity कहबा एटलीस्ट वन फीचर कॉमन टू बोथ स्ट्रक्चर कहबा तो तमे जूस पर कोनिडियम और स्केचेस ड्रा करे दरकार नै तमे चैप्टर सेटा देखियो जूस पर ऑफ क्लामाइडोमोनास और कोनिडियम ऑफ पेनिसिलियम सो होछि तो फीचर कॉमन टू जूस पर और कोनिडिया कोन बोथ ऑफ दीज आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जेटा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो जूस पर और कोनिडियम कोन बोथ होछि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड तो पहले होची क्लामाइडोमोनास जूस पर गोटे न्यूक्लियस थे गोटे फ्लैजेला थे आ जेटा पेनिसिलियम रो कोनिडियम रो गोटे झाड़ू हुए देखा जाए तार अगर एक्सो माने तार अगर तीनटा कोनिडियम था कोनिडिया था तो से लेके तार डिसिमिलरिटी ता दिजा को भीतर कोन ना जूस परटा हो जो फ्लैजेलेटेड जूस परटा हो जो फ्लैजेलेटेड फाउंड यूजुअली इन alga तो जूस परटा हो जो फ्लैजेलेटेड आ कोनिडियम टा कोन ना नॉन फ्लैजेलेटेड Those formed inside a sporangium that are endogenously formed at the our conidium conidium formed at the tip of the conidiophore that are exogenously. तो तमे सेटा लिखि दिला तो सिमिलरिटी तिला कोन गोटे सिमिलरिटी जेटा कि तीन जाक एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जाउछंती और डिसिमिलरिटी कोन ना दीटा डिसिमिलरिटी फर्स्ट होची जूस पर रे फ्लैजेला थाए कोनिडिया रे फ्लैजेला न थाए सेकंड होची जूस पर गुडा को endogenously develop होइतांते in the sporangium but conidia गुडा कोन ना exogenously formation होइतांते जेटा कि टिप ऑफ द conidiophore रे समने प्रेजेंट थांते तो एटा तला similarity and dissimilarity between juice spore and conidium justify the statement vegetative reproduction is also a type of asexual reproduction तो एटा सही सेम क्वेश्चन पुणी थर पचरा जेटा कि हम एठी लिखि देइतले जे is it possible to fifth number question is it possible to consider vegetative propagation observed in certain plants as asexual reproduction तो से कथा पुणी थर पचारचे justify the statement vegetative reproduction is also a type of asexual reproduction हम पुणी थर से सेम को तो लिखिबा the vegetative reproduction जो थाई runner stolon sucker substrate rhizome corm tuber एवडा कोन ना समान कैपेबल थांते नवा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करिबारे तापर कोन ना से इतने तक वेजिटेटिव प्रोपेगल्स कहते तापर एई सब प्लांट्स से कोन ना दीटा जाक पेरेंट इन्वॉल्व न थांते तांको प्रोसेस इतने एसेक्सुअल फिर जेनेटिक वेरिएशन सो करने सेटी नो फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन और फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स वे नो जेनेटिक वेरिएशन सो वे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व थांते तो इतपे कोन हला ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कोन हला गोटे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोली कहा गला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को इज आल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट हम सरला कोन ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सरला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 11 था शॉर्ट आंसर टाइप रो बहुत भलो भलो क्वेश्चन था तो हमरे लास्ट कोन रहले लास्ट रहले पांचटा लॉन्ग आंसर टाइप रो क्वेश्चन बता डिस्कशन करियो तो चलो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रो डिस्कशन हो enumerate the differences between asexual and sexual reproduction describe the types of asexual reproduction exhibited by unicellular organisms तो से कोई चीज asexual और sexual reproduction differences लेके सेटा गोटे पॉइंट आउट कोन लिखियो ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मनकर केतरा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अछि ताक विषय लिखियो
तो ये थोड़ा जगह खाली अच्छे तो ये लिखि दो तापर एक्स्ट्रा पेज ऐड कर देबे ना फर्स्ट क्वेश्चन कोन ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भीतर डिफरेंस कोन ता विषय लिखियार अछि नंबर 1 क्वेश्चन asexual reproduction sexual reproduction asexual reproduction कोन ता मु कहले गोटे लाइन रे लिखछु asexual reproduction कोन से माने यूनिपेरेंटल बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोन ना बाइपेरेंटल माने asexual रिप्रोडक्शन रे गोटे पेरेंट रही इन्वॉल्वमेंट दरकार बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे दीटा जाको पेरेंट रो इन्वॉल्वमेंट दरकार ना सेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं परिबोनी आ कोन ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटिक सेल रो सोमैटिक सेल उडा के इन्वॉल्व थांती बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोन ना जर्म सेल उडा के इन्वॉल्व थांती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोन ना सोमैटिक सेल इन्वॉल्व ऐसे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोन ना जर्म सेल री गैमेट बनेबो ना तो जर्म सेल्स इन्वॉल्व तापर कोन एथरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन हुए एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन हुए बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोन ना फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट हुए फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट देखा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट देखा जाए तापर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोन ना ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग माने सब जेनेटिकली पेरेंट्स तो सिमिलर है काहे ना समान कर जदी गैमेटिक फॉर्मेशन हेनी ताने सत्रे किछि ता जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बा वेरिएबिलिटी सो हबनी वेरिएशन सो हबनी ऑब्वियसली ताने पेरेंट्स करो जेनेटिक कॉम्बिनेशन जमिते तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जमिते ऑफस्प्रिंग से हबो तो ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर टू parents offspring genetically similar to parents but it are slightly different genetically dissimilar like the genetically dissimilar offspring genetically dissimilar to parents now kon na rate of reproduction both fast rate of reproduction is high rate of reproduction high एटे कोन ना रेट ऑफ रिप्रोडक्शन लोके ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तार प्रथम गैमेट फॉर्मेशन होबा तापर गैमेट रो फर्टिलाइजेशन होबा तापर एम्ब्रियो है कि सवन पुन डेवलप करी कि पूरा ऑप्शन जद जन्म तार पे डेरी टाइम तो सेट पे कोन ना रेट ऑफ रिप्रोडक्शन तंगर लो तो एटे लेखला हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पांचटा पॉइंट फर्स्ट होचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटिक सेल इन्वॉल्वमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जर्म सेल इन्वॉल्वमेंट है asexual reproduction asexual spores formation हुआ sexual reproduction formation and fusion of gametes हुए तापर offspring genetically similar to parents अठी कोना genetically dissimilar to parents और कोना rate of reproduction is higher in asexual reproduction asexual reproduction rate of reproduction is very low माने slower तो एटा तला हमर डिफरेंस एटा तला फर्स्ट एक नंबर क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट तला एटा तब सेकंड पॉइंट कोन तला ना यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो गोटनती ता विषय लेखियो ता विषय डिस्क्राइब करिया तने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म जेमति कि मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांट आ किछि प्लांट सर्टेन एनिमल्स सो करे तो एटा को वेर हुए तने हम पांचटा विषय लेखिवा तो फर्स्ट एठी कोन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट कोन होची यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म रो फर्स्ट कोन लिखवा ना बाइनरी फिजन कोन ना सते कोनते पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड है जे दीटा तक हाफ रे आ ईच हाफ कोन ना गोटे इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाए माने पेरेंट डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स अने डॉटर फॉर्मेशन हला डॉटर सेल फॉर्मेशन हला डॉटर ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हला एग्जांपल कोन एमीबा यूग्लिना पारमिसियम तो एटा तला बाइनरी फिजन देकी रिप्रोडक्शन हबा बाइनरी फिजन देकी जदी रिप्रोडक्शन हला तने एटा हला ये तब सेकंड ये कोन ना बर्डिंग तो तुम जानछो बर्डिंग टा कोन ना पेरेंट ऑर्गेनिज्म रो गोटे
डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ एज ए स्मॉल प्रोजेक्शन तापर सेटा कोन ना सेपरेट जो पेरेंटल बॉडी रो small projection formed arises from parent body that give rise to separate to form daughter organism तो लेक्चर जब बॉडी टा कोन ना गोटे पेरेंट बॉडी गोटे स्मॉल प्रोजेक्शन एराइज जेटा कि सेपरेट हे अगर कोन डॉटर रे फॉर्मेशन एटा तो ना एग्जांपल कोन ईस्ट ऑफ हाइड्रा ईस्ट एंड हाइड्रा एटी यूनिसेलुलर दिछि यूनिसेलुलर मेनली ईस्ट ऑफ हाइड्रा तो यूनिसेलुलर वे एटा होजे ईस्ट एंड हाइड्रा तापर आउट एग्जांपल ना फ्रैगमेंटेशन माने कोन ना पेरेंट बॉडी कोन ना मोर देन 2 फ्रैगमेंट्स से जदी ब्रेक हे गला पुणे सेतो जदी गोटे नोआ ईच बॉडी फ्रैगमेंट जदी गोटे ऑर्गेनिज्म डेवलप होला ताने फ्रैगमेंटेशन कहंती तर एग्जांपल कोन मु खाली कहि दउ तर एग्जांपल कोन ना स्पॉन्जेस और सेलर्जिनल तर फोर्थ एग्जांपल कोन ना जेम्यूल फॉर्मेशन जेम्यूल स्पॉन्जेस माने जो जेम्यूल फॉर्मेशन कहंती रे हो जो जेम्यूल फॉर्मेशन में कोन था ना इंटरनल बोर्ड गोटे फॉर्मेशन में जाओ जेम्यूल्स कहंती जेटा के एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड मास ऑफ सेल्स था जेटा के नुआ ऑर्गेनिज्म को परे डेवलप होते फेवरेबल कंडीशन रे नुआ ऑर्गेनिज्म को डेवलप होते ताऊ कोनती जेम्यूल्स तर एग्जांपल कोन होबो ना स्पॉन्जेस जेम्यूल्स माने कोन गोटे इंटरनल बॉडी रे कोन होतले ना एक्सटर्नल बोर्ड फॉर्मेशन होते एटी जेम्यूल्स कोन ना गोटे इंटरनल बोर्ड फॉर्मेशन हो जोतरे कि मास ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड मास ऑफ सेल था जोटा कि परे कोन वे ना गोटे न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप होता है तबरे लास्ट कोन लिखिबे लास्ट बट नॉट द लिस्ट कोन लिखे ना स्पोरुलेशन कौन था ना सामान्य dispersive structure called spores are released from parent body that germinate under favorable condition to form a new individual parent body रो dispersive structure माने disperse हे पर तो structure जेटा कि spores उडा formation हेता जेटा कि रिलीज हुए जेटा कि परे कोन था ना न्यू इंडिविजुअल रे ग्रो करता है जदि सेटा मोटेल स्पोर रहले ताको जूस स्पोर कहते जूस स्पोर कोन ना अल्बिगो और क्लामाइडोमोनास फॉर एग्जांपल कोन ना जूस स्पोर्स आ कोन होची स्पोरांजियोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर्स मान को कोनती स्पोरांजियोस्पोर आ मोटाइल स्पोर्स कोन कोनती ना जूस स्पोर कोनती नॉन मोटाइल को स्पोरांजियोस्पोर जूस स्पोर टा कोन ना अल्बुगो क्लामाइडोमोनास एठी स्पोरांजियोस्पोर रे के ना पेनिसिलियम बना स्पोरांजियोस्पोर टा होची हमरो म्यूकर और राइजोपस और तापर कोनिडिया टा कोन ना पेनिसिलियम तो स्पोरांजियोस्पोर टा कोन ना म्यूकर राइजोपस और कोनिडिया टा कोन कोनिडिया होची पेनिसिलियम तर एती त मन रखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पार्ट होची एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ डिफरेंस कोन ना कोटे यूनिपेरेंटल कोटे बाइपेरेंटल सोमैटिक सेल इन बोथ एटा तो मु कहि देतिले तापर एटा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एटा होची कोन ना बाइनरी फिजन बोर्डिंग फ्रैगमेंटेशन जेम्यूल्स और स्पोरुलेशन तो एटा तला तीनटा ता विषय ते कोइ के मु तार एग्जांपल भी लिख देजी तापर तमे जते एग्जाम लिखो ताको डिटेल पूरा लिखिबो तापर क्वेश्चन हमें पढिबा do all the gametes formed from a parent organism have the same genetic composition identical gene copies of the parental genome analyze the situation with the background of gametogenesis and provide and give suitable explanation तो पचा जो जते उडा गैमेट फॉर्मेशन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म कोन सबडा का जेनेटिकल आइडेंटिकल था पेरेंट्स को तो आंसर कोन हो ना मडा में बारंबार कहि दे ऑल गैमेट्स फॉर्म फ्रॉम अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव द सेम जेनेटिक कंपोजिशन नो ऑल गैमेट्स काहे को सब गैमेट्स माने सब गैमेट्स को भी गैमेट्स भी तार पेरेंट सहित कोन त पेरेंट ऑर्गेनिज्म सहित सेम जेनेटिक कंपोजिशन नता है तार कारण कोन से कत लिखा एना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोन था ना ऑर्गेनिज्म द फ्यूजन ऑफ गैमेट फॉर दीटा डिफरेंट इंडिविजुअल तेने से गैमेट उडा कोन था गैमेट जेनेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन होता थी तो हेटेरोगैमेटिक प्रोसेस था गैमेट्स उडा टू टाइप्स होता है कोटा हो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होती मेल्स मान को कोन कहते हेटेरो ह्यूमंस मान को कोन मेल मान को हेटेरोगैमेटिक को जो कैन से टू टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशन उडा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट
तो गैमेट्स गुड़ा कौन हैप्लॉइड था जेटा पेरेंट बॉडी रे जेटा कि अराइज होते जेटा कि आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड था A haploid parent like Monera, fungi, algae, bryophytes produce gametes by mitotic division. The number of chromosomes, that is genetic composition, remains same after such type of division. But the diploid parent mane kon the pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, and most of the animals, including human beings, produces gamete by meiosis in such organism. ମାନେ ଯେଟା diploid organism ଏ ସବୁ ଯୋଉ diploid organism ଅଛି ତାହା କରता ଗୋଟେ specialized cell called myocyte ଥାଏ ଯେଟା gamete mother cell କହନ୍ତି ଯେଟା କି meiosis undergo meiosis करे तो at the end of meiosis कौन होता है only one set of chromosomes get incorporated into each gamete. It means gamete formed contain a haploid number of chromosomes in contrast to the number of chromosomes in mother cell. तो यही सब लेखा है ଗୋଟେ haploid parent ରହିଲେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମାଇଟୋସିସ୍ କରିକି gamete ଫର୍ମେସନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ gamete ଟା କଣ ଥାଏ ନା parent body ସହିତ identical ଥାଏ बट ଯଦି ଗୋଟେ diploid organism ଥାଏ ସେ ତ କଣ କରେ ନା meiosis କରିକି gamete formation करे meiosis କରିକି gamete କରୁଛି ମାନେ one copy of homologous chromosome ରୁ ହିଁ ଆସୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିକମ୍ବିନେସନ ଆଉ ଟିକେ କାଇନେଟା ଫର୍ମେସନ ସିନାପ୍ସିସ୍ ହେଇକି ଜେନେଟିକ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର ତ obviously ହାଫ୍ ହେଇଥାଏ ମଦର ସେଟର ଆଉ ଟିକେ ଜେନେଟିକ ଭେରିଏବିଲିଟି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତ ସେ କଥା ଲେଖିଲେ କାହିଁକି ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ଏଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ Although sexual reproduction is a long-drawn, energy-intensive, complex form of reproduction, many groups of organisms in kingdom Animalia Plantae prefer this mode of reproduction. Give at least 3 reasons for this. तो से पचार जे sexual reproduction गोटे long-drawn process बहुत time लगे sexual reproduction में गोटे offspring formation होगा को सेटा गोटे energy-intensive, complex बहुत time, energy सब किसी दरकार हुए फिर भी कहीं कि आपको higher organisms मान करे accept कराइचे as the main as the mode of reproduction they prefer काहे करन ताको as the mode of reproduction ताटा को मो 3 मार्क करे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन तला जेटा को मो कोई के आंसर दे के आस्ते 3 मार्क करे एटा क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन ता थिला शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन द सेकंड क्वेश्चन थिला तो ताको हम देखियो ना कौन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन था ना न्यू वेरिएशन रो formation with creation of new variants with तो कहते हैं genetically varied offsprings are produced that adapt to changes in environment and survive in all climatic conditions कहते हैं genetically varied offspring formation में जेटा कि सब कर environmental changes climatic condition में adapt करके survive कर जाए आ कौन ना sexual reproduction for कौन है ना genetic recombination शो करे जहाँ पर कि variation शो है जेटा कि evolution को promote करता है that give rise to evolution variation gives rise to evolution तो से कथा लेके तो sexual reproduction काहेंगे दरकार sexual reproduction रे गोटे नुआ variant पूरा entirely new variation produced हुए ସେମାନେ कौन तो sexual reproduction पर समय genetically better variants माने genetically better composition वाला offspring formation होने जहाँ पर ସେମାନେ harsh environment और climatic condition को adapt करके survive कर जाते आ मर्दने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वेरिएशन शो करे जोटा कि इवोल्यूशन पे हेल्प करता है तो एही तीनटा पॉइंट होचे सब 70 भी कहले 2 नंबर कहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एठी भी मु कहूचे एही तीनटा रीजन ही जेटा जा पे हायर प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एज मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोली एक्सेप्ट करछन्ते तो आपे बजाचे differentiate between estrus and menstrual cycle ovipary and vivipary give an example for each type से पचाचे estrus cycle और menstrual cycle और ovipary और vivipary भितर डिफरेंस कोन कहया तो estrus cycle हम जानचे estrus cycle नॉन प्राइमेट mammals मान कर रहता है menstrual cycle प्राइमेट mammals मान कर रहता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस और कौन में खाली जगह लेके तमादि के डिफरेंशिएशन को 4 नंबर फर्स्ट टाइम पुणे से डिफरेंशिएशन मागिचे 4 नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएशन कोन estrus cycle और menstrual cycle तो estrus cycle फर्स्ट पॉइंट कोन ना सेटा हो cyclic changes in the activities of ovary or accessory ducts as well as hormone during reproductive phase of non-primate mammals is called estrus cycle then estrus cycle और menstrual cycle definition लिखवा ताने कोन ना सेम जो cyclic changes हम दिए जगह लिखा cyclic changes in activities of ovaries and accessory ducts as well as hormone during the reproductive phase of एटी थाई नॉन प्राइमेट मामास एटी होची प्राइमेट मामास तो एटी हमें पूरा राइट रे लिख दवा तबे डॉट डॉट मार दे मेंस्ट्रुअल रे त कोन estrus cycle डेफिनेशन द
cyclic changes in the activities of of ovaries and accessory ducts as well as hormones during reproductive phase in non-primate mammals is called estrous cycle. तो से लिखा है जो cyclic changes देखा जाए ovaries and accessory ducts in as well as the hormones in non-primate mammals during reproductive phase तो कौन कहते हैं ना estrous cycle कहते हैं. तो menstrual cycle कौन कहते हैं सही कथा सेम होता लिखियो ए नॉन प्राइमेट जगह कौन लिखियो ना प्राइमेट मैमल्स को लिखियो प्राइमेट mammals को कौन कहते हैं ना menstrual cycle कहते हैं. ह्यूमंस मानकर भी होता है menstrual cycle तो प्राइमेट mammals मानकर कौन था ना menstrual cycle था नॉन प्राइमेट mammals मानकर कौन था ना estrous cycle था. तो तापर कौन सेकंड पॉइंट कौन सेकंड पॉइंट होचे estrous cycle जो फीमेल्स मानकर था समय कौन ना स्ट्रांग irresistible sexual urge शो करन समय कौन थे ना females so strong irresistible sexual urge एटा कौन था सेमती किछि सेमती कौन दे डू नॉट शो सच टाइप ऑफ समथिंग सेमती किछि सेक्सुअल अर्ज समय शो करना दे कोडी ना मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट शो सेक्सुअल अर्ज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल. और तापर estrous cycle कौन थे there is estrous or heat production at the time of ovulation and copulation occurs only at that period. तो estrous cycle कौन थे जब ovulation और copulation है तब तक बटर heat production होता है but menstrual cycle से भी चेंज होता है. तो लिखियो there is estrous or heat production during ovulation and copulation but it is something no such phenomenon happens एटी menstrual cycle सेमते किछि हुएनी. आउ कोन shedding of endometrium of bleeding does not occur. It is shedding of estrous cycle कौन ना shedding of endometrium or bleeding doesn't occur. It is shedding of endometrium bleeding हुए नहीं but it is shedding of endometrium and bleeding हुए इतने को menstrual cycle कौन थे एटी estrous cycle कौन थे estrous cycle example non primate माने cow sheep dog ए माने सब एटे ये कौन ना monkeys apes humans ए माने सब होचंती menstrual cycle. तो एटी हम डिफरेंस लिखले कौन ना estrous cycle और menstrual cycle में डिफरेंस लिखले estrous cycle डाउ जो cyclic changes in the activities of ovary reproductive tracts associated accessory ducts and hormones in the reproductive phase of non-primate animals that is called estrous cycle. एटा होची menstrual cycle. It is strong irresistible sexual urge देखा फीमेल माने एटी sexual urge शो करंतनी तापर एटी estrous by heat production during ovulation and copulation एटी scientific phenomenon हुएनी. estrous cycle shedding of endometrium बा bleeding केबे हुएनी but primates मानकर हुए menstrual cycle रे shedding of endometrium और bleeding होइतै. तापर क्वेश्चन कोन सेकंड पार्ट तो कोन थिला ना अभिपरी और द्विपरी भितरे डिफरेंस कोन अभिपरी और द्विपरी भितरे डिफरेंस कोन. तो अभिपरी माने कोन अभिपरी माने ले एक डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट लिख ले एक एटी give birth to young ones अभिपरी माने जे अंडा दिए विपरी माने जे 6 जन्म करे एति को डिफरेंस. तो तार निजे निजे मन माने भी भाबी के लिखि परियो जे ता भीतर डिफरेंस कोन. तर एक्स उडा कोन थे एक्स उडा को हार्ड calcareous cell रे हार्ड calcareous cell रे कवर्ड हे तांती एटी नॉट कवर्ड अभिमुड़ा को नॉट कवर्ड बाय calcareous cell रे नॉट बाय calcareous cell अभिमुड़ा calcareous cell रे नॉट कवर्ड. तब एटी कोन
Development of zygote takes place outside of female body. Development of zygote outside female body. कहीं ना जैसे कुकुड़ा जैसे अंडा देता है कई से अंडा छोड़ा करता है फुट देता है कुकुड़ा अंडाटा बाहर रहता है और माँ कोड़ा जाके ता ऊपर बसी ताको ये करे और सेटा तक ना आउटसाइड फीमेल बॉडी रे कोन होबो ना डेवलपमेंट ऑफ जायगोट होबो एटी कोन होबो ना इनसाइड फीमेल्स बॉडी एटी इनसाइड फीमेल्स बॉडी हो तब एटी कोन फीमेल्स ले एग इन सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट बट द चांसेस ऑफ सर्वाइवल लेस देन लेस सर्वाइवल survival at a high chances of survival एटा कहीं फीमेल बॉडी भीतर रोची से ना कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट रे रोची तो एटी कोन ना हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल सो करे विपारे तो अभिपारे में छै ऑल बर्ड्स मोस्टली रेप्टाइल्स जोड़ा एग लेइंग मैमल्स और विपारे कोन मैमल्स एक्सेप्ट मोनोट्रेम्स जेटा कि एग लेइंग मैमल्स तो विपारे ओपारे हमर सरला विपारे ओपारे भीतर पड़े देले तापर एठी हम कोन पड़ेले एटी हम स्टोसाइकल और मेस्ट्रोसाइकल भी पढ़े थे विपरी अभिपरी भी हो गला तापर 5 नंबर क्वेश्चन जो 5 नंबर क्वेश्चन कौन देछि rose plants produce large attractive bisexual flowers but they seldom produce fruits on the other hand tomato plant produce plenty of fruits though they have small flowers analyze the reason of failure of fruit formation in rose से पता छै एनालाइज कर जेटा तो मोर माइंड निज दिमाग चलेवा क्वेश्चन देछि जे रोज फ्लावर रो एत बड़ फ्लावर तय कि भी बाइसेक्सुअल फ्लावर तय कि सेते फ्रूट प्रोडक्शन हुए नहीं बट अटी टमाटो बोली प्लांट जार भी छोटा फ्लावर से सेते केमती फ्रूट प्रोडक्शन हेउ both these plants rose and tomato both selected by human beings for different characteristics the rose for its flower and tomato for its flower roses being able to provide do not need to produce फिर तो ये आंसर भी लिख दीजिए लास्ट में तो मैं सही कथा लिखियो The rose plant कौन करे? Rose plant produce large, attractive, bisexual flower, but they seldom fruit because failure of fruit formation in rose. Because rose plants may not produce viable pollen, hence no fertilization takes place. तो हम reasons कौन लिखियो? First reason मैं तुमको 8 लिख दूँ हो जाएगा 8 लिख दूँ 5 नंबर क्वेश्चन लिख दूँ तो फर्स्ट रीजन कौन थी वो ना रोज कौन थी वो may not produce तो पूरा may not लिखो मैं थोड़े may not लिख देगी छोड़ दूँ may not produce मैंने एनालाइज देखना तो हमको निजे निजे रो दे दो आपको जो थॉट्स कौन may not produce viable pollen so no fertilization pollen যদি ফর্মেশন होने viable তারা no fertilization आओ कौन may not have functional egg तर functional egg ही नहीं होगा दे आओ कौन ना may have defective and non-functional ovule जेड़ा कि female gametophyte generator तो may not have कौन ये लगे functional लिखे functional यदि may not have functional ovule नहीं हो आओ कौन यदि egg छड़ी may not have functional eggs may not have functional ovules आओ कौन self incompatibility थी वो bisexual है कि भी यदि होने ताने self incompatibility थी वो उड़े internal barriers उड़े internal barrier भी था इपरे internal barrier भी था इपरे for pollen tube growth and fertilization ପାଇଁ ତାଙ୍କର pollen tube growth ପାଇଁ ଗୋଟେ internal barrier ବି ଥାଏ ଯାହାପରେ pollen tube growth ହେଇ ପାରୁନି ଆଉ କଣ ସେମାନେ ରୋଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡା ମୋଷ୍ଟଲି ହାଇବ୍ରିଡ ସେମାନେ ଭେଜିଟେଟିଭ ରିପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଟେରାଇଲ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ଏଗୁଡା କଣ ନା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହାଇବ୍ରିଡ ରୋଜେସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡା ମେନଲି ହାଇବ୍ରିଡ ସେମାନଙ୍କର ଭେଜିଟେଟିଭଲି ସେମାନେ ଭେଜିଟେଟିଭ ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ଟେରାଇଲ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ तो एटा लिखला जे काहे रोज प्लांट रे काहे फ्लावर फॉर्मेशन फ्लावर फ्रूट फॉर्मेशन होची ओने काहे ना रोज प्लांट मे बी तार वायबल पोलन से न तो सेने फर्टिलाइजेशन नहीं परने मे बी फंक्शनल एग्स में तेवा फंक्शनल ओव्यूल्स भी न थाई पारे आ कोन तार सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी थाई से बाइसेक्सुअल है के तार फ्रूट डेवलपमेंट होनी आ कोन ताकर इंटर कुछ इंटरनल बैरियर भी थाई पारे पोलन ट्यूब ग्रोथ को इनहिबिट करजी आ कोन ना ସେମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ ହେଇଥାଇ ପାରେ ରୋଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡା ମେନଲି ହାଇବ୍ରିଡ ସେ ନେଇକି କଣ ଥାଏ ନା ଭେଜିଟେଟିଭ ରିପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରନ୍ତି ତେଣୁ
sterile हबार चांसेस अधिका तो एई सब रीजन कोन था जहाँ पर एई सब रीजन कोन जहाँ पर कि रोज प्लांट्स गुड़ा लार्ज अट्रैक्टिव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हेले भी ସେମାନେ फ्रूट फॉर्मेशन करती बट टमाटो गोटे छोटा टमाटो प्लांट छोटा फ्लावर हेले भी एत बड़ा बड़ा फ्रूट्स से फॉर्मेशन करे तो एटा हो सब रीजन थिला मुझे जति रीजन देखली जे काहे की हे पर नथो ए जे पांचटा पॉइंट लिखली एटा पांचटा मेन पॉइंट कि काहे की रोजेस प्लांट हे पर नथो तो हमर ए चैप्टर टा अभी फिनिश हैला जेटा कि थिला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म द एग्जांपलर डिस्कशन एटा को बहुत डिटेल्ड डिस्कशन कर देलु हमें तापर तमे चैप्टर को ठीक से पढ़िबा चैप्टर टा को ठीक से पढ़िले जाय के तमे यार एग्जांपल को इजीली सॉल्यूशन कर परियो आ जो लॉन्ग क्वेश्चन जो गुडा को माने थिंकिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन गुडा देतला सेडा भी तमे यदि बुक्स ठीक से पढ़ियो बुक्स ठीक टेक्स्ट ठीक से पढ़ियो त निजे ही तमे अनुमान करी कोइ परियो जे कहीं केमते देछि जे केमते एडा होछि तो आज पई एते ही थाउ